हेलो हाय। आज हम लोग पढ़ेंगे जोनल सॉइल के बारे में, जोनल सॉइल के बारे में, एजोनल सॉइल के बारे में, एजोनल सॉइल के बारे में और इंट्राजोनल सॉइल के बारे में, इंट्राजोनल सॉइल के बारे में, इंट्राजोनल सॉइल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। लेट्स स्टार्ट विद जोनल सॉइल। तो जोनल सॉइल क्या होता है? जोनल सॉइल आर दोज सॉइल, these are those soils that develop in situ and thus reflect the effect of the climate in which they develop in situ. Reflect the effect. Since they develop in situ, therefore there is ample time for different soil forming processes like erosion, leaching, and capillary action, which are controlled by climate to show effect on these soils. And thus, because of the effect of these different processes, there are genetic horizons found in the zonal soil, which you study as layer A, layer B, layer C, and so on, right? So these different layers of soil we will be studying in the next lecture. We are simply here to get an idea what is zonal, what is azonal, and what is intrazonal soil. Azonal soil क्या होता है? Azonal soil is that soil which does not develop in situ and is brought to the location where they are found by agents of transportation such as water or air. And since they do not have developed, didn't have developed in situ, therefore they do not reflect the effect of the climate in which they are found in. For example, alluvial soil. अलुवियल सॉइल एजोनल सॉइल कैसे हुआ? क्योंकि एलुवियल सॉइल में ना आप जेनेटिक होराइजंस नहीं पाएंगे, जेनेटिक होराइजंस नहीं होते। मतलब वो ए लेयर, ओ लेयर, बी लेयर, एलुवियल लेयर, इलुवियल लेयर, ये सब नहीं होता। देयर इज सिंपली layers, thick layers of alluvial deposits. There are no genetic horizons, no genetic horizons. तो जोनल सॉइल्स की पहचान ही यही है कि इनमें जेनेटिक लेयर्स पाए जाते हैं, विच आर एन इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट हैज बीन प्रोग्रेस्ड इन सीटू। ठीक है। इंट्राजोनल सॉइल क्या होते हैं? इंट्राजोनल सॉइल क्या होता है? इंट्राजोनल सॉइल क्या होता है? इंट्राजोनल सॉइल वो सॉइल होता है, एंड इट इज अ सब कैटेगरी, इट इज अ सब कैटेगरी within the zonal type, within the zonal type of soils that reflect the effect of a local dominant factor, local dominant factor, लोकल डोमिनेंट फैक्टर। ये डोमिनेंट फैक्टर यूजुअली हम लोग दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। दो तरह के लोकल डोमिनेंट फैक्टर होता है। एक तो पेरेंट रिलेटेड, पेरेंट रॉक आउट ऑफ विच द सॉइल इज फाउंड, और दूसरा होता है ड्रेनेज रिलेटेड। पेरेंट रॉक से रिलेटेड जो सॉइल्स हैं, जो इंट्राजोनल सॉइल्स हैं, वो हो जाते हैं कैल्सीमॉर्फिक सॉइल, कैल्सीमॉर्फिक सॉइल हो जाएगा कैल्सीमॉर्फिक सॉइल। कैल्सीमॉर्फिक सॉइल में जो पेरेंट मटेरियल होता है कैलकैरियस होता है, बहुत कैल्शियम होता है इसमें, कैलकैरियस। ठीक है। इसीलिए वेरी बेसिक होता है। कैल्शियम कटायंस एंड अदर कटायंस आर वेरी मच अमेंडेड इन कैल्सीमॉर्फिक सॉइल। ड्रेनेज से रिलेटेड इंट्राजोनल सॉइल कौन से हैं? जो जोनल सॉइल्स है उनमें अगर ड्रेनेज का फैक्टर लोकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए और कैरेक्टरिस्टिक बदल दे जोनल सॉइल की, तो उसको ड्रेनेज रिलेटेड इंट्राजोनल सॉइल कहते हैं। जैसे कि तीन तरह की पाए तीन चार तरह के सॉइल हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला हेलोमॉर्फिक, हेलोमॉर्फिक। दूसरा है सोलोनेट्स। तीसरा है सैलोनचाक, सैलोनचाक। एंड एंड चौथा है सोलोडिक, सोलोडिक। सॉरी, आई फॉरगॉट, आई हैव टू चेक माय नोट्स। सो
आप ये डिस्कस करते हैं कि है क्या चीज़, हेलोमॉर्फिक क्या है, सोलूनेट्स क्या है, सेलोनचेक क्या है, सोलोडिक क्या है। सो हेलोमॉर्फिक सॉइल क्या है? हेलोमॉर्फिक सॉइल क्या है? हेलोमॉर्फिक वो सॉइल है जहाँ ड्रेनेज बहुत पुअर है और पानी बहुत ज़्यादा होता है। ड्रेनेज बहुत ज़्यादा है, ड्रेनेज बहुत पुअर है, ड्रेनेज इज पुअर एंड रेनफॉल इज एम्पल। रेनफॉल इज rainfall is high. So what happens? There is logging of water. There is water logging. ठीक, पानी भर गया, ये नीचे सॉइल है आपका, तो इस कारण से क्या हुआ? ग्लेजिएशन होता है। ग्लेजिएशन, इनको ग्लेई सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, हेलोमॉर्फिक सॉइल्स को ग्लेई सॉइल भी कहते हैं। ग्लेजिएशन में होता है क्या है कि चूंकि ये सॉइल लेयर है, ऊपर पानी है, तो नीचे ऑक्सीडेशन, एयर ऑक्सीडेशन होता नहीं है, O2 इज नॉट सफिशिएंट। तो जो uh, there is no oxidation, and therefore the oxidation, there is uh, the bacteria within this soil, they respirate without oxygen. They respirate without oxygen, and therefore changing this characteristic of soil. Characteristic of the soil. तो ये हो गया हेलोमॉर्फिक सॉइल। फिर उसके बाद आता है आपका सैलोन चाक। सैलोन चाक क्या है? Ceylon chalk is usually found in semi-arid and arid areas. Semi-arid and arid areas. Say there is a semi-arid and arid area where temperature is too high, water is insufficient, and then you couple it with poor agricultural practice. Poor agricultural practices. Agricultural practices. Like in Punjab. So the temperature is too high, water is insufficient in these regions, and then you are pumping water artificially. So what happens? Initially, the water goes up to some layers beneath the soil, and then because of the high temperature and capillary action, starts moving upwards and evaporating. So whatever the soil, whatever the salt is in or the cations are in the lower layers, they are coming out of the soil, out of the lower layers, and are depositing over the upper layers because of the capillary action. So the upper layers are heavily laden with salt or cations, and this, because of this, uh, the fertility goes down. खैर डिस्कस नहीं, फर्टिलिटी का डिस्कशन अभी नहीं करते हैं। सो सैलून चैक में क्या है कि जो अपर लेयर्स हैं, दे आर हेविली लेडन विद कटायन और यू कैन से सॉल्ट। ठीक, तो ये मैं सैलून चैक की बात कर रहा हूँ, सैलून चैक की बात कर रहा हूँ। सोलूनेट्स में क्या होता है? सोलूनेट्स में क्या होता है? सोलूनेट्स आर सिमिलर टू सैलून चैक, बट ओनली डिफरेंस इज द प्रीडोमिनेंट कटाइन जो है उसमें, प्रीडोमिनेंट कटाइन जो है वो सोडियम का होता है, वो सोडियम का होता है। ठीक, नेक्स्ट, सोलोडिक सॉइल। सोलोडिक सॉइल क्या है? सोलोडिक सॉइल में देखिए, हैवी रेन, ये ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ हैवी रेनफॉल नहीं है। ठीक है, ड्रेनेज पुअर है। तो चूंकि हैवी रेनफॉल नहीं है, तो और पुअर ड्रेनेज है, तो इनफैक्ट इन इवन दो देर इज हैवी पुअर ड्रेनेज बट द रेनफॉल इज नॉट हैवी, इसलिए वहाँ पे लॉगिंग तो नहीं होती है। बट चूंकि पुअर ड्रेनेज है, वाटर लॉक, वाटर कैन नॉट लीव द रीजन, देयरफॉर इट परकोलेट्स डाउन। सो परकुलेशन की वजह से क्या होता है कि जो अपर लेयर्स हैं उनमें जो कटायंस होते हैं, दे परकुलेट टू द लोअर लेवल्स। तो अपर लेयर एसिडिक हो जाता है बिकॉज बेसिक कटायंस लीव द अपर लेयर्स, तो अपर लेयर एसिडिक हो जाता है, और जो लोअर लेवल है वो बेसिक हो जाता है, बेसिक हो जाता है। सो दिस इज योर सोलोडिक सॉइल।
Usually it is related with regions with light rainfall that prevents water logging, but a region with poor drainage that prevents the water from leaving the region, and thus it has to percolate down, causing your upper layers to be acidic but your lower levels become basic. अच्छा, सो सैलोन चक जो है, इसको वाइट एल्कली भी कहते हैं, वाइट एल्कली भी कहते हैं। और सोलुडिक सॉइल जो है, सॉरी सोलोनेट सॉइल जो है, सोलोनेट सॉइल है, इसको ब्लैक एल्कली भी कहते हैं, ब्लैक एल्कली भी कहते हैं। क्या क्या डिफरेंस होता है इनमें? द प्रीडोमिनेंट कैटायंस यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ब्लैक अल्कली में सोडियम इज प्रीडोमिनेंट, और पीएच यहाँ पे 8.5 से कम होता है, यहाँ पीएच 8.5 से ज़्यादा होता है। कलर इज वाइट, वाइट वाइट पैचेस आर देयर ओवर द सॉइल। दिस इज ब्लैक इन कलर। क्यों ब्लैक इन कलर है अभी बताता हूँ। ब्लैक इन कलर। नेक्स्ट, द सैलोन चक्स आर identified by a phenomena called flocculation, और ब्लैक अल्कली सॉइल में डिफ्लॉकुलेशन होता है, डिफ्लॉकुलेशन होता है। क्यों होता है मैं बताता हूँ। और वाइट कलर क्यों है, ब्लैक कलर क्यों? देखिए, सोडियम का आयन जो है ना बहुत बड़ा होता है। सोडियम आयन इज बिग, रियली बिग। So if you draw a clay particle, this is sodium ion, if you draw a clay particle like this, and if you draw smaller cations like calcium and magnesium, so this is another, sorry, so this is another clay particle, Cp, Cp, this is calcium or magnesium. So there is ample amount that it can, say this is positively charged and this is negatively charged. So if I draw this again, this is negatively charged, this is positively charged. There is another cation here which is positively charged, this is another cation here, this is positively charged, and this is positive, this is negative. So there is ample space where positive and negative can attract each other, right? Clay particles attached to the cations will act as a bond and they will attract each other. These both particles will be attracting each other because of the presence of cation. So there will be aggregation of soil particles. Okay, they will stick together. Right. This is the case when calcium and magnesium are there as cation. What happens when sodium is there? Right. Sodium के केस में क्या होता है? Sodium cations are very big, like this. Sodium, sodium. This is clay particle. So what happens is that the positive repels each other. So the clay particles, what happen if there is a soil layer, and if there is high amount of sodium, negative, positive. So the smaller clay particles will be repelled from each other, right? Because of the presence of sodium. So there will be no space anywhere. There will be no air spaces anywhere within this layer of the soil because everything will be filled with smaller clay particles, because they are being repelled from each other and they will occupy every space they get. So what happens is that there is deflocculation happening. Every pore of the soil is filled with clay particle. They're far away from each other. पहले क्या एग्रीगेशन हो रहा था, तो क्ले पार्टिकल्स ऐसे थे, थोड़ा बहुत एयर स्पेस आ जाता था बीच में, बट यहाँ नहीं है, एवरीवेयर इज क्ले पार्टिकल. So there is no air within the layers of the soil. So this decreases the fertility. So this decreases the fertility. Right. और अच्छा, white क्यों है और ब्लैक क्यों है? ब्लैक क्यों? ह्यूमस जो होता है ना, ह्यूमस इज soluble in alkaline solution, basic solution.
So since uh, since so it dissolves much more, जितना pH ज्यादा होगा ना उतना ज्यादा soluble होगा ह्यूमस, और जितना ज्यादा pH ज्यादा होगा उतना ज्यादा soluble होगा ह्यूमस। एंड चूंकि डिफ्लॉकुलेशन हो रहा है, सो दे इफ देर इज a soil solution like this से, मतलब सॉइल सोल्यूशन है, इसमें वाटर भी है, सॉइल भी है, ह्यूमस भी है, ठीक है। तो अगर इसका पीएच हाई है तो ह्यूमस इसमें डिजॉल्व है, एंड दिस वाटर सोल्यूशन इज diffused throughout the soil layer because of deflocculation, deflocculation, defloc, और ह्यूमस का कलर क्या होता है, ब्लैक। So this solution it is diffused throughout the soil layer because of deflocculation, because of presence of sodium ion। वही जब जो ब्लैक व्हाइट एल्कलाई है उसमें एग्रीगेशन हो जाता है, तो इवन दो ह्यूमस इज प्रेजेंट इट इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द सॉइल। यहाँ पे अगर ये व्हाइट एल्कलाई है तो यहाँ पे एग्रीगेशन के कारण ह्यूमस तो है और डिजोल्व भी है क्योंकि पीएच बेसिक है, बट व्हाट हैपेंस इज दैट इट इज नॉट प्रेजेंट थ्रू आउट द लेयर्स, क्योंकि वहां पे एग्रीगेशन में इट इज इट्स इट्स एक्सटेंट इज लिमिटेड। बट जब डिफ्लॉकुलेशन होता है ना व्हाइट ब्लैक एल्कलाई में, तो इट इज द ह्यूमस सोल्यूशन इज प्रेजेंट थ्रू आउट द सॉइल लेयर। सो इस कारण से जो ह्यूमस का कैरेक्टरिस्टिक कलर है ब्लैक, it is imparted to the soil layer in the black alkali soil which is soronates, black alkali soil which is soronates, ठीक। बस मैंने ये नहीं डिस्कस किया है कि, तो ये मेरा डिस्कशन यहाँ कंप्लीट हुआ, बस मैंने ये डिस्कस नहीं किया यहाँ पे कि इस जोनल सॉइल्स के टाइप क्या क्या होते हैं, which will be discussing in some next lecture। So that's it for today, bye bye, take care, and if you like my lectures please subscribe।